Hello students, we are back again on your favorite learning platform, Learn Forward by FITECAP. Today we are going to study chapter number 14, The Dawn of National Movement. So let's get started. So we'll start with a beautiful story. In a small town named Chandrapur, nestled in the heart of pre-independence India, lived a group of young friends who were passionate about their country. Their names were Ananya, Raj, and Mohan. One evening, as they gathered under the ancient banyan tree, Ananya shared an inspiring vision. Ananya envisioned a united India free from foreign rule where every citizen had equal rights and opportunities. Raj, the charismatic speaker, suggested forming a group of spread awareness and work towards this dream. Mohan, with his strategic mind, proposed joining the Indian National Congress, a political party that aimed to achieve India's independence through peaceful means. The Friends became active members of INC and participated in various movements that marked the different phases of India's struggle for freedom. In the early years, they witnessed the moderates advocating for constitutional reforms and increased representation. Ananya, Raj, and Mohan actively took part in spreading the message of freedom, inspiring people in Chandrapur to join the cause. As the years passed, the extremists gained prominence with the INC. Ananya, Raj, and Mohan found themselves caught in the fervor of non-cooperation movement, urging people to boycott British institutions. The three friends faced challenges, including arrest and hardship, but their determination remained unshaken. The story of Ananya, Raj, and Mohan reflects the major characteristics of national movement led by INC. The journey mirrors the various phases of the movement, from the initial calls for reforms to the more assertive demands for complete independence. And in this chapter, we are going to study about all that people did to help India get out of the clutches of Britishers, to have their own freedom and to have their own constitution. Now, let's understand how did it all happen. In the 1800s, lots of important things happened in India that had big effects. There was the revolt of 1857, protest by farmers, protest by tribal people, movement for social and cultural change, and all this was affecting people. All these events changed the course of Indian history. People were already feeling a strong sense of being Indian. In the second part of 1800, Indians started realizing the need of working together to protect their shared interests. They understood that some kind of organization was responsible for the community. Now let us understand what is nationalism. Nationalism is a feeling when people feel connected because they share things like where they live, their cultural history, and what they want for future. People began to see India as one united nation, looking past their local cultures for the first time. So rise of nationalism was it happened because of major reasons. One was economic exploitation. Now, Britishers were looting the Indians. They were taking away our businesses. They were deteriorating our economy by taking away the handicrafts, by imposing high tax on us. So it was making the life of farmers very difficult. Then there were the policies that Britishers were following were very discriminating policies. Now this was now initially, the in the earlier invaders like Mughals, they became the part of Indian society and culture, and they were working for the betterment of the country. But Britishers were not like them. They were giving Indians a second class treatment. Then is unification of the country. Then when people saw this happening, so they were alert and they really wanted somebody to actually stand for them and decide what is to be done. So British joined in the country together in three ways: in politics, in how things were run, and in money matters. They thought that India is a one group, big group when it comes to making rules. So they created the same laws for everyone, no matter where they live. One person, the government general called the viceroy, was in charge running the whole of India, which was difficult for them to manage. The religious and cultural making 1800 or 1700, there were so many movements which actually awakened people. There were many big people like Raja Rammohn Rai, Swami Dayanand Saraswati, Vivekanand, Ishwar Chandra Vidyasakar. They were the one who were able to understand that these people are exploiting us, and they awakened this feeling of nationalism among people. Then spread of education. Now when Britishers came to India, they wanted India to learn some languages, and they wanted to learn people to have knowledge of education, which not only kindled a spirit to learn and read, but it also made people realize what was actually happening with them. Right. Then development of press. Then when press started developing, there were various journals, newspaper articles written by the nationalist editor, which promoted a sense of unity, patriotism, national freedom, and they also criticized
on the wrong policies of the Britishers, and the important papers were Amrit Bazar, Patrika, Kesari, Maratha, Indian Mirror, Hindu, and Tribune. Now, development of means of transport and communication. Now, nationalism was also developed because of this, because when we started with post telegraph railway lines, it promoted unity among people. People could travel from one place to another, they could intermingle, they could communicate, they could express their desire for freedom. Then is development of vernacular language. Now, in modern education was actually emphasizing on the learning of English, on the knowledge of English, while the people like Dadabhai Naoroji, Sir Syed Ahmed Khan, Bal Gangadhar Tilak, Justice Rande, they advocated that vernacular language should also be learned. Then let's come to the Lord Lytton's policies. Now, Robert Lytton, right? Edward Robert Lytton. He was the first Lytton, and he was an English statesman and poet. He served as a Viceroy of India during Great Famine of 1876 to 1878. This uncompromising implementation of Britain trading policies blamed for severity of the famine, which killed up to 10 million people. जो एडवर्ड रॉबर्ट लिटन था, उसकी वजह से मतलब फैमिन इतना बढ़ गया कि 10 मिलियन लोगों की जान चली गई. ये ऑफिस में रहा इंडिया में फ्रॉम 12 अप्रैल 1876 टू 8 जून 1880. जो पॉलिसीज थी ना लिटन की, वो इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन बढ़ गया. Then came the Ilbert Bill controversy. Lord Ripon's law member Sir Counterpart Ilbert printed एक बिल बना, Ilbert Bill. इस बिल में इंडियन जजेस को वो केसेस मिले जिसमें यूरोपियंस इन्वॉल्व थे. इस बिल की वजह से यूरोप में तो बहुत परेशानी हो गई, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई. तो इंडियंस जो थे दे बिकेम कन्विंस कि यूरोपियंस जो है इंडियंस को इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं. इल्बर्ट की बिल की वजह से उन्हें सच्चाई सामने आ गई कि इंडियंस को ये इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं. Then let's come to Indian political association. Around the mid 19th century, Indians जो हैं वो awaken हो गए कि क्या हो रहा है उनके साथ. ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनी in 1851 में बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी. तो ये सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनाया. 1852 के अंदर ब्रिटिश बॉम्बे एसोसिएशन बनी बॉम्बे में और मद्रास एसोसिएशन बनी मद्रास में. 1870 और 1880 के अंदर ये एसोसिएशन जब सेटअप हुई, इसके अंदर पूना सार्वजनिक सभा बनी 1870 में, इंडियन एसोसिएशन बनी 1876 में, मद्रास महाजन सभा बनी 1884 में और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी 1885 में. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसमें डिमांड्स पुट की क्लियरली ब्रिटिशर्स के सामने और बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे मार्चेस हुए और ये लोगों को बताया गया कि जो आप भेदभाव करते हैं इंडियंस के साथ ये गलत है. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एडुकेटेड इंडियंस और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपर सेक्शन से थे और वो एडुकेटेड थे. तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन को फाउंड किया, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी कैलकाटा में 1883 में और सेकेंड कॉन्फ्रेंस 1885 में हुई थी, which coincided the session of Indian National Congress. Let's study about Indian National Congress. It is generally believed that A.O. Hume, a retired Indian civil servant, was instrumental in forging the Indian National Congress. But actually the founding of Indian National Congress was a response to the contemporary socio-economic and political condition which had resulted in long subjugation of Indians to alien rule. तो इसमें A.O. Hume ने basically एक प्लेटफॉर्म दिया था कि लोग जो एडुकेटेड इंडियंस है वो आके सोशली पॉलिटिकली अपने ना डिबेट्स रखें, अपनी बातें करें, कॉन्वर्सेशन करें, सो दैट कुछ चेंजेस आए, अच्छे के लिए चेंजेस आए. 1880 में ये जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था. 28 दिसंबर 1885 में 72 people met in the hall of Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Mumbai. It was the inaugural of INC and the beginning of organized political movement on all India level. जो फर्स्ट सेशन था, it was described as middle class darbar in which the congressmen were more concerned with the loyalty and blessings of British rulers than calling for progress and reforms. But later on, it provided a suitable platform to put a growing resentment of Indian masses. Vomesh Chand Banerjee, एक बैरिस्टर थे बंगाल से, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के. He outlined the charter and all the characters mentioned in it. The main objective was the promotion of personal friendship among the countrymen, removal of all the prejudices relating to races, creeds and provinces, promoting national unity and deciding the future course of action. तो ये वोमेश चंद बैनर्जी ने ये जो चीज़ों पे काम किया, इससे कुछ ट्रिगर हुआ ऐसा जिससे भेदभाव कम होना शुरू हो गया. It was a big leap towards the growth of nationalism. तो nationalism इससे इंसाइट हुआ लोगों के अंदर.
The tactics adopted by Congress included petitioning and drawing attention to the grievances of public discussion to attain the goal of representative institution in India. The Congress became a symbol of growth, of feeling of nationhood. Now let's come to the moderates and because moderates एक group था जो बहुत पीस लविंग था, वो नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स को के ऊपर उम्मीदें थी कि ब्रिटिशर्स जो है उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करेंगे और पीसफुल वे में वो अपनी बात को रखते थे. द कांग्रेस सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स द मॉडरेट्स एंड द रैडिकल्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दे रोट इन द न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल हाउ ब्रिटिश रूल वाज एक्सप्लॉइटिंग द पीपल एंड द कंट्री. अब ये जो था इसमें एक 3 लोगों की तिगड़ी थी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल. इनको लाल बाल पाल भी कहते थे. ये इन्होंने बेसिकली फ्यूचर नेशनलिज्म पर बहुत फोकस किया. इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि गवर्नमेंट किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट करती थी. मॉडरेट्स को बहुत फेथ था ब्रिटिश गवर्नमेंट पे और उनके आइडियाज ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम थे. उन्होंने लगता था कि ये पीसफुल स्ट्रगल करेंगे और मीटिंग्स एंड स्पीचेस करेंगे तो ये हमारी बात मान लेंगे, हमें फ्रीडम दे देंगे. 1892 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिससे विच प्रोवाइडेड नॉमिनेशन सीट्स टू द काउंसिल. इट फेल्ड टू सेटिस्फाई द पीपल. अब ये वाला जो एक्ट है वो फेल हो गया. But many leaders were dissatisfied with the working of moderates in Punjab, Maharashtra and Bengal. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. तो ये तीनों ने कहा कि ये जो है ये रेडिकल थे. लाल बाल पाल कई मॉडरेट जो है चमचे बन के रहेंगे ब्रिटिशर्स के. तो उन्होंने रेडिकल ग्रुप ज्वाइन किया. ये जो रेडिकल्स थे ये सेल्फ रिलायंस में बिलीव करते थे एंड नॉट सेंडिंग पिटिशंस एंड प्रेयर्स. तो वो कहते थे हम अपने आप करेंगे, करना हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे बार बार. उन्हें बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, फ्रीडम इज माय बर्थ एंड आई शैल हैव इट. एंड दे फेल्ट इंडियंस they have to fight for their rights because it is their land and they have to fight for it. So the partition of Bengal happened in 1905 by Lord Curzon, who announced the partition of Bengal. इसका मेन एम क्या था, ये क्यों चाहता था? बिकॉज ये इंडिया में हिंदू मुस्लिम्स रहते थे, उनको डिवाइड करना चाहता था और ये मेन एम था लॉर्ड कर्जन का. एट दैट टाइम बंगाल जो था वो एक बहुत से बड़ा प्रोविंस था. उसके अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी आता था. अक्टूबर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनल हुआ. बंगाल को 2 प्रोविंस में बांट दिया गया, ईस्टर्न बंगाल और असम, और उसके बाद वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. और while the new province of Eastern Bengal and Assam was to include Assam and divisions of Dhaka, Rajshahi and Chittagong, the new province had Dhaka as its headquarter. जो लॉर्ड कर्जन था उसने कहा कि पार्टीशन जो है एक रीएडजस्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज पर असली में ऐसा नहीं था. they actually wanted to divide people on the basis of Hindu and Muslims, and they wanted to actually create a lot of resentment internally so that they can rule over them. So this was the reason why partition of Bengal happened. तो अब ये जब हो रहा था, then started the स्वदेशी movement by महात्मा गांधी. ये जो था ये एक सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम. ये इस मूवमेंट से बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट हुई और लोगों को समझ आया कि हमें किस तरीके से लूटा जा रहा है और हम किस तरीके से इनको यहाँ से बाय बाय कर सकते हैं. So it was the successful economic strategy to remove the British Empire from power and improve the economic condition in India. Strategies of Swadeshi movement involved boycotting British products and revival of domestic products so that the Indian industries could prosper. तो ये एक डिसाइड हो गया कि हम ब्रिटिशर्स के सारे प्रोडक्ट्स को बाय बॉयकॉट करेंगे, यूज नहीं करेंगे. जो भी हम चीज यूज करेंगे वो इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करेंगे. इस तरीके से ब्रिटिश जो है अब इंडिया को एक डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज करेंगे. यहाँ से सामान उठाते थे, वहां ले जाते थे, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करते थे. जो चीजें वहां नहीं यूज होती थी वो इंडिया में डंप करते थे और एक्सेसिवली हाई और एक्सॉर्बिटेंट रेट पे बेचते थे. तो गांधी जी का अब ऐसा नहीं होगा. तो ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम पार्टीशन बंगाल 1905 एंड कंटिन्यू टू 1908. इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ द प्री गांधीयन मूवमेंट्स. चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट्स के मेन में कौन लोग थे? औरबिंदो घोष थे, वीर सावरकर थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय. ये जो मूवमेंट है स्टार्ट हुआ था बंगाल से. फाइनली पूरी कंट्री को इसने इन्वॉल्व कर लिया था. लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया, इंडियन गुड्स को प्रेफर किया. और इस वाला ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें इंडियन विमेन ने भी इक्वल पार्टिसिपेशन दिया. इस मूवमेंट की वजह से लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंस आया और इस्टेब्लिशमेंट हो गई इंडियन इंडस्ट्री, जो कि टेक्सटाइल, मैचेस, सॉप वगैरह
प्रोड्यूस करी थी. ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट जामशेदजी जी टाटा established his iron steel industry and V.O. Chindapur Pillai set up a steam navigation company. So all this happened during this time. Now let us understand the divide and rule policy of Britishers. ये जो पॉलिसी थी इससे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे लोगों के अंदर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट करके वो उनके ऊपर राज कर रहे थे. तो जब भी कभी कोई बाहर से आके आपके ऊपर आपको डिवाइड कर दो तो आप समझ जाते हैं कि वो आपकी हित में नहीं है, राइट. So the British employed divide and rule policy in British India as a means of preventing an uprising. The partition of India is often attributed to this policy. तो इनका जो पार्टीशन है ना वो इसी पॉलिसी पर डिपेंडेंट है. तो टिपिकल एलिमेंट क्या थी उनकी डिवाइड एंड रूल टेक्निक में? creating or encouraging division among people in order to prevent alliances that could challenge the sovereign. तो लोग सोचते हैं लोगों के बीच में टकरार, भेदभाव ना, मतभेद कैसे करते हैं, तो ये एक साथ नहीं मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे तो हम इनके ऊपर राज कर सकते हैं. एडिंग एंड प्रमोटिंग दोज हु आर विलिंग टू कोऑपरेट विद द सॉवरेन. अब उन लोगों को ये लोग बहुत फैसिलिटीज देखते थे जो इनके बहुत ज्यादा चमचे, बहुत ज्यादा ना इनके जो सीकोफैंट्स है, सीकोफैंट कौन होते हैं? चमचे. जो बहुत सीकोफैंट्स है उनको ये लोग बहुत सारे प्रिविलेज देते हैं. हेल्पिंग ग्रो डिस्ट्रस्ट एंड एनिमिटी बिटवीन द लोकल और लोकल रूलर्स के बीच में ये लोग लड़ाइयाँ करा देते थे. इनकरेजिंग फ्रिवलेस एक्सपेंडिचर दैट लीव लिटिल मनी फॉर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एक्टिविटीज. और सारा खर्चा ये जो है उस चीजों में लगाते थे जहाँ पे बेसिक चीजों के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहता था. फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries the British were able to rule 2/3 of the subcontinent directly and exercise a considerable influence over the princely states that accounted for remaining 1/3. While the strategy of divide and rule was used most effectively, another important aspect of British rule in India was the training of the elite layer within Indian society who were artfully tutored into becoming modern British supporters. तो उन लोगों ने क्या किया था, जो elite लोग थे, पैसे वाले लोग थे, बहुत ऊपर वाले लेयर थे, उनको उन्होंने इस तरीके से ट्रेन किया था कि वो इनके पपेट्स बन गए थे. Thomas Mackley was to set the tone for what educated Indians were going to learn about themselves, their civilization, and the view of Britain and the world around them. Thomas Mackley and nothing but negative thoughts, disdain for Indian history and civilization. Then came the Surat split in 1907. The differences between the moderates and extremists. अब moderates क्या थे? Moderate तो सोचते थे, वो बहुत ट्रस्ट करते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर और वो सोचते थे कि ब्रिटिशर्स उनका फायदा करेंगे, वो पीसफुली अपनी अपने ना प्रेयर से और पीसफुली पिटिशन फाइल करेंगे, सब कुछ हो जाए. एक्सट्रीमिस्ट उल्टा सोचते थे, इनके दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो गई, एक कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया इन दो ग्रुप में. तो सूरत क्या था, एक सेशन हुआ था कांग्रेस का 1907 में. मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द एक्सट्रीमिस्ट मेथड ऑफ बॉयकॉट एज इट इन्वॉल्व्ड द यूज ऑफ फोर्स. द कांग्रेस split and became to be dominated by moderates. The extremists led by Tilak function from outside. The two groups united again in Lucknow session of Congress in 1906. The government took advantage of the Congress split. It launched a massive attack on the extremists. The activities and programs of the extremist leaders were suppressed. तो उन्होंने, क्योंकि extremists उनके खिलाफ थे ना बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने उन पर अटैक कर दिया और उनको दबाने की कोशिश की. Then came the Muslim League. The British tried to do their best to check the feeling of unity in India. अब उनका डिवाइड एंड रूल बढ़िया से चल रहा है. अब वो चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडियंस जो है ना वो कभी भी यूनाइटेड ना रहे. At times, they openly followed the policy of divide and rule. It was declared that if educated Muslims remained loyal to the British, they would be rewarded with government jobs and other special favors. तो उन्होंने मुस्लिम को बोला, जो एजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, अगर वो आप हमारे साथ लॉयल रहेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया जॉब मिलेंगे, स्पेशल फेवर्स मिलेंगे. As a result, large number of educated Muslims either remained aloof or turned against the nationalist movement. तो इसका नुकसान क्या हुआ नेशनलिज्म पर? या तो वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए और या फिर उन्होंने नेशनलिज्म से विड्रॉ कर लिया. The communist tendencies touch a height in the year 1906 with the formation of All India Muslim League with official patronage. तो सबसे बड़ चीजें कैसे बढ़ी जब उन्होंने मुस्लिम लीग बना दी और जिसने पार्टिसिपेशन, इसने ना सपोर्ट किया. तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनने पर इट सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड डिमांडेड. तो यहाँ पे मुस्लिम लीग बनी. मुस्लिम लीग ने किसको हेल्प किया? पार्टीशन ऑफ बंगाल को. और उन्होंने कहा हमारे को अपनी राइट्स दो मुस्लिम्स की कि गवर्नमेंट सबमिट में आप हमें गवर्नमेंट जॉब में आप हमें लेके चलोगे. इट कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ द अपर क्लास मुस्लिम बिलोंगिंग टू द जमींदार और टॉप सर्विस क्लास लाइक आगा खान, नवाब ऑफ ढाका, सलीमान खान एंड नवाब मुइजुद्दीन उल मुल्क. इनकी प्राइमरी मोटिव क्या था? to put a stop to young Muslims from going over to Congress and thereby the nationalist fall. The Muslim League, being a purely loyalist body, looked up to government for favor and patronage and received the same in generous helping. In the process, the British propaganda that the partition of Bengal would benefit the Muslim led to rise of communal and separate tension. ये basically एक गवर्नमेंट का तरीका था कि मुस्लिम्स को अपने साइड कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि हम आपको बहुत अच्छे लिए और करेंगे, अच्छी अच्छी जॉब के साथ और बहुत सारी सर्विसेज का, तो वो एटलीस्ट वो जो है नेशनलिज्म वाला फीलिंग छोड़ के हमारे साथ जुड़ जाएंगे.
देन केम द मॉडले मिंटो रिफॉर्म। अब गवर्नमेंट को पता चल गया, देखिए ये जो कर रहे हैं इससे लोग भड़क रहे हैं, अब उनको अपना जो फिर से ना कमांड डेवलप करना था, गुडविल भी लेके चलनी थी मॉडरेट्स के, तो उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट बना दिया 1909 को, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते थे। इसके मेन फीचर्स थे जो नंबर ऑफ मेंबर्स है ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, वो बढ़ा देते हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वर नॉट इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, उनको कौन इलेक्ट करेगा, जमींदार, लैंड ओनर्स वगैरह। और मुस्लिम जो थे वो ग्रुप कर दिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेयर मुस्लिम कैंडिडेट कुड कंटेस्ट इलेक्शन एंड वर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। तो ये जो था ये पैसिफाई करने के लिए, मुस्लिम लीग के लीडर्स को पैसिफाई करने के लिए, पर ये जो एक्ट था मॉडले मिंटो रिफॉर्म, इसने फर्दर हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत ज्यादा डिफ्रेंसिएशन कर दिया। Then came the Imperial Darbar. The Imperial Darbar in 1911 was held in Delhi. Now the British King George and Queen attended the Darbar. Many Indian princes were invited to hold the Darbar, and they to show their loyalty towards the British crown. Two important declarations were made in the Darbar: cancellation of partition of Bengal and shifting of the capital from Calcutta to Delhi. So this happened in Imperial Darbar. Then came the Lucknow session which happened in 1906, जिसने फिर भी चीजों को थोड़ा सा पैसिफाई किया, थोड़ा अच्छा किया इंडियंस के लिए. Events between 1911 and 16 brought major changes in the Muslim League and the Congress. 1930 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन साथ में आना शुरू हो गई थी, कांग्रेस ने सिंपैथी एक्सप्रेस की और उन्होंने इंटीग्रिटी ऑफ टर्की ड्यूरिंग द बाल्कन वॉर से सपोर्टेड द कॉज ऑफ मुस्लिम इन वेस्ट एशिया. 1915 में प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने एक एनुअल सेशन अटेंड किया था मुस्लिम लीग का, जो कि किसने प्रिसाइड किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने. 1916 के अंदर सेशन ऑफ द कांग्रेस व्हिच इज नोन एज लखनऊ पैक्ट वाज मोर सिग्निफिकेंट एज इट नॉट ओनली बॉट द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस क्लोजर बट आल्सो सो द रीयूनियन ऑफ मॉडरेट एंड. तो ये जो लखनऊ पैक्ट था इसने इन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स को भी पास लाया और जो डिफरेंसेस क्रिएट किए जा रहे थे उसको थोड़ा सा पैसिफाई किया. The reunion was made possible largely because of initiative taken by Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak, who led the Home Rule movement in India. अब आगे आपका लखनऊ पैक्ट जो था ये शॉर्ट साइटेडनेस था कि आगे क्या होने वाला है. कांग्रेस ने टेम्परली एक्सेप्ट कर लिया और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और फाइनली जो है इन दोनों पार्टी ने ज्वाइन कर लिया. अब इस टाइम पर बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज भी आए थे. देयर वर मेनी पीपल हु वर नॉट सैटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ पीसफुल मूवमेंट. दिस पीपल वर कन्विंस्ड दैट द यूज ऑफ वायलेंस अलोन कुड ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया. दिस पीपल केम टू बी कॉल्ड एज रेवोल्यूशनरी. रेवोल्यूशन मूवमेंट बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था और ये जो थे यहाँ पे सोसाइटीज बन गई थी जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था. वो अनुशीलन समिति बंगाल में, अभिनव भारत सोसाइटी पुणे में. ये जो रेवोल्यूशनरी थे इन्होंने ट्राई किया कि ये टेरर क्रिएट करें ब्रिटिशर्स के लिए. 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी इन्होंने बॉम्ब फेंक दिए कोच पे. इन्होंने सोचा उसमें जो है ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, पर वहां पे उसमें ब्रिटिश वुमेन जा रही थी और वो दोनों मर जाती हैं. अब ब्रिटिशर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं तो चक्की तो अब डर के मारे अपने को ना सुसाइड कर लेते हैं, पर खुदीराम बोस को ये लोग पकड़ लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. 1912 के अंदर जब उन्होंने लॉर्ड हार्डिंज को मारने की कोशिश की तो जो रेवोल्यूशनरी थे वो बेसिकली कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र में, अजीत सिंह पंजाब में और अरबिंदो घोष बंगाल में. तो ये जो रेवोल्यूशनरी थी इनको बहुत बुरी तरीके से इनके साथ ट्रीटमेंट हुआ, इनको जेल में डाल दिया गया और सम वर एग्जीक्यूटेड विदाउट ट्रायल. एंड अंडमान सेलुलर जेल बनाई गई थी 1906 में, जिसमें मेन पर्पस था टू हाउस पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम इंडिया. So now you can see how difficult it would have been for Indians to survive at that point of time. Now let's come to the assessment part. Who served as viceroy during the Great Famine? It was Lord Lytton. The Indian National Association was formed by S.N. Banerjee. Viceroy Curzon partitioned Bengal in 1905. So Swadeshi movement started from Bengal. Then Indian National Congress was formed in December 1885. Yes. Then the Maulana Abdul Kalam was the founder of Muslim League. No. Lord Mountbatten was the first governor. He was the last governor general. थे. Congress helped in formation of Muslim League. Yes. British came as traders. Yes. Now Rudyard Lytton was the first English statesman and poet. British Indian Association was formed in 1855 in Calcutta by the amalgamation of landowners and the Britishers. Dash, the moderate has great faith in British government and in their ideas of justice and freedom. Muslim League was formed in the year 1906. When and by whom was the partition of Bengal effected? It was the partition of Bengal was effected in the year 1905 by Lord Curzon.
Define nationalism. Nationalism feeling where people awakened and realized that they were that they had everything in common, be it their culture, tradition, and they really wanted Britishers to go out from India. What was the Swadeshi movement? The Swadeshi movement was a movement which was launched all across India to boycott the foreign goods and to promote Indian goods. What was the impact of Ilbert Bill on the Indian national movement? The Ilbert Bill really made them realize that the Europeans were against Indians and they were giving them a second-hand treatment. Why was Muslim League formed? Muslim League was basically formed to divide Indians on the basis of Hindu-Muslim, so that there is a conflict between both of them and Britishers can have upper hold on the Indians. Who was the Viceroy of India at the time of the partition of Bengal? The Viceroy was Lord Curzon. Why did he advocate the partition? He really wanted to advocate the partition because he was showing me to the Muslim that they'll be getting better facilities and better jobs in case they remain loyal to the government. But basically, it was a policy of divide and rule. Now let's come to the answers in detail. What were the major demands of moderates in the Indian national movement? The major demands of moderates in the Indian national movement was that they really wanted to demanded more rights for Muslim. They wanted more Indian industry to be settled. They wanted more quality education to be given to them. Then which British officer helped in the formation of Indian National Congress and why? The British A.O. Hume was the British officer which helped in formation of the Indian National Congress. She really wanted to provide a platform for political discussion for the elite and the educated Indians. In which way was the Morley Minto reforms of 1900 harmful for the Hindu-Muslim unity of the country? The Morley Minto reforms basically were the ones which actually proved very fatal for the Indians, because they were not only they were not actually there to give reforms to people or to help people get better rights, but they were the ones which were decided to partition India on the basis of Hindu-Muslim, as we have studied in the chapter. So the Morley Minto reforms were the reforms which had actually created a lot of distress in the country, and they did not do anything good for the Indians. Rather, the Morley Minto reforms, they had a privilege of they really wanted to have a greater impact on India, so they enhance the number of members in the Central Legislative Council and Provincial Legislative Council, and the elected members were not elected by the common people, they were elected by the zamindars, and Muslims were given better rights. But this was not the main reason of starting with Morley Minto reform. The main reason was to enhance the Hindu-Muslim unity, the division of Hindu-Muslim, so that people can fight with each other and cannot think of what the Britishers were doing with them. Explain the policy of divide and rule, taking real life example. When we talk of the divide and rule policy by the Britishers, it was a policy in which Indians were actually divided into two different sectors. They created and encouraged division among the people in order to prevent alliances that could challenge the sovereign. They aided in promoting those who were willing to cooperate with the sovereign. They helped grow distrust and enmity between the local rulers, and they encouraged frivolous expenditure that leave many for local and political and military activities, creating a lot of distress. And then this is how they divided people on the term of Hindus and Muslims. Right, so this was all about the chapter. I hope we had great time learning. Happy learning.